Hello to everyone. In this video, we are going to learn all about adjectives. In this lesson, I will give you the definition of an adjective and what are the important types of adjectives. Besides that, we will discuss the order of adjectives. It means when you find more than one adjective in a sentence, which should you put first, second, and so on. So, first of all, what is an adjective? An adjective is a word we use to describe a person, place, or thing. In grammar, we say that an adjective modifies a noun or pronoun. Modifies here means to change the noun or pronoun by giving more information about the adjectives. The adjectives provide further information about an object's size, shape, age, color, or region or material. Here are some examples of adjectives like it is a big table. Here the adjective big is indicating the size of the noun table. It is a brown table. Here adjective brown is indicating the color of table. In the next example, old is indicating the age of the noun table. Now let's understand through one more example. There are 5 big black American dogs in the house. Focus on the noun dogs, and can you tell me which adjective modifies? Means give the more information about dogs. Here the adjectives are 5 big black American. Adjectives answer questions like how many, what size, what color, what type. Here in the example, adjectives occur before the noun, but they can also appear after the noun or pronoun. Like in this example, the grass was green and fresh. Here the adjectives green and fresh appear after the noun grass, and notice that we use the linking verb be. The past tense was to connect the noun and the adjectives. Dear students, after discussing that what an adjective is, let's talk about the types one by one. The very first is adjective of quality. Adjective of quality are also known as descriptive adjectives. A descriptive adjective is a word which describes noun and pronouns. These adjectives provide information and attribute to the nouns, pronouns they modify or describe. Means adjective of quality are the words that modifies or describes the noun. Qualities नाउन की क्वालिटी को जो बताते हैं, उनकी फीचर्स को जो बताते हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वी हैड अ वंडरफुल डे लास्ट वीक. You look very smart in this shirt. In these sentences, wonderful and smart are adjectives. Now next is adjective of quantity. An adjective of quantity is an adjective that indicates the quantity. It answers the question how much, कितनी मात्रा में. Adjectives of quantity are generally used with uncountable nouns, the nouns that we can't count. ऐसे nouns जिनको हम count नहीं कर सकते, ऐसे nouns के साथ हम adjectives of quantity use करते हैं. These adjectives express the approximate amount of the noun rather than the exact number. क्योंकि यहाँ हम approximate की बात करते हैं कि लगभग कितनी मात्रा में, क्योंकि हमें exact numbers का पता नहीं होता. There we use adjective of quantity. Many, much, some, several, few and enough are some examples of adjective of quantity. Some examples are
There was little milk at the bottom of the jug. Here, milk. We can't count milk, the quantity of milk. So here we have used quantity, adjective of quantity little. I had enough exercise for the day. Enough is the example of adjective of quantity. Here we can't count exercise. It is uncountable, so we will use enough. Next is adjectives of number. An adjective of number is an adjective that shows the exact number of persons or things denoted by a noun or pronoun. An adjective of number can also demonstrate a noun's position or place in a certain order. This is also known as a numeral adjective. इन्हें numeral adjective ही बोला जाता है. Adjective of number are used with countable nouns. इनको countable nouns के साथ यूज़ करते हैं. ऐसे noun जिनको हम count कर सकते हैं, there we use adjective of number. These can be divided further into three parts. The first is definite numeral adjectives. जहाँ definite numbers की बात होगी वहाँ हम यूज़ करेंगे definite numeral adjectives, and it can be cardinal numbers and it can be ordinal numbers. Cardinal numbers are 1, 2, 3, 4 and ordinal numbers are 1st, 2nd, 3rd, 4th. There are 30 students in my class. Here the exact quantity is 30. We know the exact number of students, that there are 30 students in my class. I ate 5 mangoes. 5 is the exact numbers. She was the first to join the dance class. It is ordinal number first. So these are the examples of definite numeral adjectives. Indefinite numeral adjectives. Indefinite numeral adjectives indicates an approximate amount instead of the exact number. अब यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर जब नहीं होते, जैसे सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, हम इस टाइप के एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं जो ये बताते हैं कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता. जैसे अगर हम लिखें सेवरल स्टूडेंट्स को हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, तो उस सिचुएशन में हम सेवरल यूज़ करते हैं, सेवरल स्टूडेंट्स. मैनी पीपल को हम काउंट तो कर सकते हैं, बट हमें एग्जैक्ट नंबर जब नहीं पता तो हम इस टाइप के इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. इट इज़ द थर्ड सब पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर. डिस्ट्रीब्यूटिव like every, each, another, either. These are the examples of distributive numeral adjectives, like every student in the class stood up. क्लास का हर एक स्टूडेंट खड़ा हो गया. Each one of you will get a different project. These are the examples of distributive numeral adjectives. Next is demonstrative adjectives. A demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words like this, that, these, those. Demonstrative adjective directly किसी person को या object को refer करते हैं और ये mainly होते हैं this, that, these, those. Now where to use this and where to use those. That, this refers to a singular noun close to the speaker. ये singular noun के लिए यूज़ होता है जो कि स्पीकर के क्लोज होता है, बिल्कुल पास में होता है. And that refers to a singular noun far from the speaker, जो स्पीकर से दूर हो, object या person. There we use that. For example, if I say that building is so beautiful. That building here means building स्पीकर के पास में नहीं है. That एक ऐसा एडजेक्टिव है जो डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बिल्डिंग दूर है, उसको पॉइंट किया जा रहा है. This car is mine. It means here this, the adjective this indicates that car is near by the speaker. कार स्पीकर के साथ में खड़ी है. नेक्स्ट इज these and those. These is the plural form of this and those is the plural form of that. Now next is possessive adjectives. A possessive adjective indicates possession, ownership, belongingness to someone or something. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, are, their, your. All these adjectives
ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। जब भी पोजेशन की बात होगी कि ये थिंग किसको बिलोंग करती है, जैसे माई कार, हिज कैट, हर ड्रेस, हिज सिचुएशन, देयर सिचुएशन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। Interrogative adjectives like which, what, whose we used for to ask a question. बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इन एडजेक्टिव्स, इन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद किसी नाउन और प्रोनाउन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होते। अगर ये लिखा जाता है विच फ़ोन डू यू यूज़, विच फ़ोन, यहाँ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव विच, उसके इमीडिएटली आफ्टर यूज़ किया गया है फ़ोन। फ़ोन इज़ अ नाउन, इट मीन्स इट इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर लिखा गया विच इज़ योर फ़ोन, इट इज़ इनकरेक्ट, या इसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते विच इज़ योर फ़ोन, क्योंकि विच, वट, हुज, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इनके बाद एक नाउन या प्रोनाउन का आना ज़रूरी है। These were the types of adjectives. Now, orders of adjectives. Dear students, what do I mean here by order of adjective? Well, in English, when you have more than one adjective describing a noun, there is usually a fixed order in which to put these adjectives, and the mistake that students often make is that they sometimes put adjectives in the wrong order. अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं तो सेंटेंसेस, उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में यूज़ करना होता है। एक स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से अपनी विश के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स को आगे पीछे नहीं लिख सकता, एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो अप करना पड़ता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ मिस्टेक कमिट करते हैं। टू यूज़ एडजेक्टिव्स इन नेचुरल ऑर्डर बिफोर अ नाउन, फॉलो द रूल और अ ट्रिक। एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं, लर्न करेंगे इसको, OSASOCMP। अब ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव्स को पुट करते हैं। हेयर O स्टैंड्स फॉर ओपिनियन, ब्यूटीफुल, बोरिंग, स्टूपिड, डिलीशियस, यूजफुल, लवली। एक नाउन के बारे में हमारे ओपिनियन क्या है, वो ब्यूटीफुल है, बोरिंग है, स्टूपिड है, डिलीशियस है, यूजफुल है, लवली है, कंफर्टेबल है। And S stands for size, big, small, tall, huge. A for age, old, young, new, ancient, modern. S for shape, like round, square, circular, fat, heavy, long, short. O here is origin, like Pakistani, British, Eastern, Indian, Australian, American. C stands for color, like black, yellow, blue, white. M stands for material, like gold, wooden, silk, paper, cotton, etc. P here is purpose. एक नाउन को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर लिखा जाता है शॉपिंग बैग, बैग here is noun and the purpose of this bag is that it is being used for shopping. शॉपिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्लीपिंग बैग, वेडिंग ड्रेस, ड्रेस का पर्पस क्या है, वेडिंग ड्रेस है ये। Let's take an example. Bed sheet is a noun, bed sheet, and here are the adjectives like American, red, big, new, cotton, square, attractive. Now your job is to put all of these adjectives in the correct order before the noun bed sheet. Pause the video if you want, think about the order and then play the video again and check. Here how you order or sequence adjectives in English. If we have a determiner, put it first. Here determiner is an, so it is put at the beginning of the sentence. Then say our opinion. In this case, the word attractive. Attractive is our opinion that bedsheet is very attractive. Then comes the size. Size is big. Shape is square.
After that, we put age. In this case, new. Then comes color. Color is red. And then origin. Origin is American. We can then say what material it is made of. Cotton. Cotton is the material here. And finally, we can include its purpose if we want. In the case of bedsheet, we don't have a purpose, so we don't need to include it. So here is the sentence: an attractive, big, square, new, red, American cotton bedsheet. Dear students, I hope you enjoyed the lesson and learned a lot from it. Thank you, students.